हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह हम इलेक्ट्रिकली सिलेंडर कट आउट टेस्ट परफॉर्म करते हैं या इंजेक्टर कट आउट जो है टेस्ट हम करते हैं। ये जो आज की हमारी मशीन है ये एक कोमात्सु का व्हील लोडर है और मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है पासवर्ड के बारे में और उन बटन के बारे में जो हम यूज़ करते हैं उस मल्टी पर स्क्रीन को, जिसमें ये सारे जो टेस्ट हैं या फंक्शन जो हैं वो दिए हुए हैं। उनके उस वीडियो में मैंने डिटेल के साथ सब कुछ बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो पहले नहीं देखी तो मेरी ये गुजारिश है कि पहले आप लोग वो जो वीडियो है वो देख लें, फिर आपको ये वाली वीडियो जो है वो समझने में आसानी हो जाएगी। और वो वीडियो आप इस आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं या उसका लिंक मैंने नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दिया हुआ है, उसको क्लिक करें और आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप वीडियो नहीं भी देखना चाहते, बाद में देखना चाहते हैं तो बाद में देख लेना। फिर कैबिन के अंदर चलता हूँ जहाँ मैं वो डिटेल के साथ आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम ये टेस्ट करते हैं। These are the buttons. Two buttons are here. Actually, these are four buttons. This is execution button, or this is a enter button. This is a forward, and this one is a previous, and this is a next button. These four buttons we use to operate the screen. When I press these two buttons at a time, I can enter this screen. 1 to 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. For going next cursor, next, if I want to go next digits, so I use this execution button. I press this one, so you can say I reach to the next digits. I want to here write 4, so by using these two buttons I can increase or decrease the digits number. So now I can use this one upside, so our this can 1, 2, 3, 4. If I put 1, so this is my code. I put the code to enter this screen for the functions, special function. This is code for the special function. So I use this button, press this button, so then I will reach to the this screen. This is right electrical field, and I press this button, next. So I will reach a cylinder cutout. I reach a cylinder. So by using this button now, I select this button. So now I will reach on the, I press execution button. This is the cutout cylinder test. So I push that this is cylinder 1, 2, 3, 4, 5, 6 cylinder. Here the cursor is blinking. When I press execution button, so my first cylinder will cut. Okay. When I press again this button, so I go to the next one. So my second cylinder I can cut. Similarly, I cut one by one. I can test the cylinders are okay or no okay. So which cylinder I will cut, the cylinder which I want to cut, I press execution button, and then you can see this cylinder number 6 now is in cut position. So downside is no, you can see is as a black, and this cylinder number 6 is blinking. It's mean cylinder number 6 is cut. If I press the execution button, so now is to become normal. Also change the machine when cut this cylinder. So be with me, and I'm going to start the cursor is blinking on the cylinder number 1. So when I press again execution button, you can listen, the sound is different. Maybe, I don't know, maybe you listen now the sound is changed. Then cylinder number 1 is cut. So I go to the cylinder number 2. So now I cut this one. You can, when I cut this cylinder, is changing, is sound change, and also it's start blinking. Now cylinder number 2 is blinking, and you can see is also
sound is changed. So it's mean my cylinder number 2, injector number 2 is this time is not working, is cut. Again press execution button. Now the cylinder again working. Now I go to the injector number or cylinder number 3. I cut this one. Now I cut. Now sound changes. Mean this injector is okay. This injector have no problem. I again cut this one. Go number 4. I cut cylinder number this, and you can say cylinder number 4 is now in a cut position. Now I'm going to cylinder number 6. So now cylinder number 6 is cut, it's not working. So my sound is also changed now. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।